जय मां शाला पिला माने मु सोमनाथ आपण मानन स्वागत करछि शारदा फिजिक्स को। त पिला माने ए क्लास रे हम कोन लिखबा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड तयारी हबो ए गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे। ओके तो हमें से जिनसटा ए क्लास रे हम डिस्कस करबा। ओके सो देखबा कोन कहूछि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। Due to an electric dipole. Okay. अच्छा तो आम कौन करवा ना ये गोटे डाइपोल टे नवा पॉइंट पी रे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिवार अछि ए एंड बी। अच्छा एटा होछि मिड पॉइंट डिस्टेंस होछि 2d सेम चित्र रे भी करी हे थांता अवश्य किंतु देख ए दीटा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल दीटा जक मे भी गोटे क्वेश्चन आसी पारे तुम 8 मार्क कि अलग अलग है 5 मार्क रे आसी पारे। ओके तो सेट पे हम अलग अलग कर देखि नि छी तो देखिबो तुम सुविधा अनुसार तुम लिखिबो। डिस्टेंस टा नउचे हमें r कोठो ना सेंटर ओ रु। ओके ये एंगल टाइम नउचे थीटा ये एंगल टा थीटा। ओके ए पॉइंट रे गोटे कंपोनेंट आसीओ जोटा कि r वेक्टर रो कंपोनेंट थिवा ताको हम दबा ए r देन आउट कंपोनेंट आसीओ जोटा कि होची थीटा रो कंपोनेंट ताको हम दबा ए थीटा देन आर रिजल्टेंट कंपोनेंट जोटा आसीओ सेटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड। आर बहुत प्रकार बाट अछि माने करियो भाई किंतु एटा जेतो हमको सिंपल हवा हम सेट पे एटा भी यूज करबा। ओके तो एटा होची कोन ना रेडियल कंपोनेंट ई आर जो कंपोनेंट अछि देन ई थीटा टा होची थीटा जो कंपोनेंट देन ए थीटा रा रिजल्टेंट कंपोनेंट जोटा हो सेटा हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सो हमें ऑलरेडी फार्मूला ही पढिछे कोन ई इक्वल टू माइनस डेल पी से अनुसार हमें आर रे भी बाहर करबा देन थीटा रे भी बाहर करबा तापर हमें देखिबा कोन ना तार से जो अछि हमरो ये कंपोनेंट अछि जोटा कि हमरो रिजल्टेंट कंपोनेंट अछि सेटा बाहर कर देखा। ओके सो फर्स्ट हम स्टार्ट करबा कोड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ओके तो आपको तमे लंबा चौड़ा के एमिति भी लिख परिबो कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्टेंस 2d ताको देकिना p इज ए पॉइंट ताको पुरा लिखि परिबो किंतु बाकी हमर जेहेतु फिजिक्स में डायरेक्ट पॉइंट टू आंसर लिखबा। ओके तो हम कैलकुलेट करबा द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is calculated using the formula of E equal to minus del P। ओके E equal to minus del P रा फार्मूला में यूज करिकना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा देन एबे हम कैलकुलेट करिया कोन ना द कंपोनेंट ऑफ फील्ड along the radius vector the component of field along the radius vector r। ओके तो radius vector r जो कंपोनेंट सेटा को हम कैलकुलेट करबा जोटा कि होची e r को हम केमते कैलकुलेट करना माइनस dv अपन में dr हला तो आर हमें पार्शियल डेरिवेटिव नबा तो आको डेल बाय डेल आर भी न लिख करो किंतु dv बाय डेल आर भी किछि भूल न देन माइनस d बाय dr। अच्छा तो पोटेंशियल ऑलरेडी हम बखरे अछि आ पूर्व हमें कैलकुलेट करथले पोटेंशियल सो पोटेंशियल कोन दिछि ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके सो तमे q बाय r पके देले भूल भाल हिजो देन हम पूर्व तो ऑलरेडी माने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो पोटेंशियल है हमें सही पोटेंशियल ही यूज करबा। ओके देन आपको तमे डेरिवेटिव करले कोन आसो देखो माइनस d बाय dr अछि ताको तो छाड़ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा इ सब जगह जिंस हो कांस्टेंट बाहर पड़ेसला देन माइनस d बाय dr रो डेरिवेटिव हला 1 बाय r स्क्वायर अछि तो ऊपर पड़े कोन छै ना 1 बाय r टू द पावर -2 हे जो तो हम करी ही नोचे
माइनस डी एटा नुह सो माइनस टा थाउ देन कांस्टेंट कोन आसला ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा एटा कांस्टेंट पळा आसला देन रहिला कोन ना d by d r of r square so r square r to -2 into r to the -3 -2 plus 1 -2 sorry -2 -1 -3 then r to the -3 into -2 रहिला ओके सो माइनस माइनस प्लस हे जिवो देन आ हम लिख परियो कोन ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos theta sorry 2p cos theta into divided by rq divided rq इटा आसला कोन पिला माने ना रेडियल कंपोनेंट माने er आसला er जेमते आसला हम सेमते कैलकुलेट करिया कोन ना e थीटा कैलकुलेट करिवा देन e थीटा कैलकुलेट कर साले पर हम कोन करिवा ना तार हम नपा जो रिजल्टेंट वेक्टर बाहर करिया ओके अच्छा ये जो एंगल टाक आम ये फाइ नहीं है ना फाइ along a direction perpendicular to r the field component e theta is given by हमें जो रेडियल कंपोनेंट अच्छे ई आर ताको पूरा 90 डिग्री करथबो ई थीटा ओके ई थीटा इज गिवन बाय कौन ई थीटा हमें केमिति बाहर करू ई थीटा इक्वल टू -1/r dv by d theta okay -1/r then d by d theta of 1/4 pi epsilon naught p cos theta divided by rq ओके सो देखो ये तीनटा जिनस तो बाहर पड़े आसो देन p भी पड़े आसो केवल रहबो कना cos थीटा डेरिवेटिव माइनस sin थीटा ओके सो एटा r तो मिसियल r सॉरी एटा r क्यूब फुल हम लिखचे एटा r स्क्वायर देन एटा हे जिवो कोन ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin थीटा डिवाइडेड बाय rq एटा आसला कार कंपोनेंट ना e थीटा र कंपोनेंट नेक्स्ट हम बाहर करबा कोन ना रिजल्टेंट हम केमि बाहर करू ना e इक्वल टू कोन माने रूट ओवर ऑफ e r स्क्वायर प्लस e थीटा र स्क्वायर ओके सो देखो मैं एठी लिखि दउ छी हम पकरे मते टिके इजी भी हबो e r हम पकरे कोन आसला ना e r आसला धन्य p cos थीटा सॉरी p divided by 4 pi epsilon naught r square cos theta then e theta कौन आसला सॉरी एटा 2p आस्थियो ना हां 2p एटा किंतु कौन आसला ना p divided by 4 pi epsilon naught r cube sin theta ओके सो ए दुटा जिनस आसला देन आको हम नेकिना कोन करबा ना बाहर करबा इलेक्ट्रिक फील्ड जोटा के होची रिजल्टेंट वेक्टर the magnitude of the resultant field at P the magnitude of the resultant vector at P रे magnitude तार कौन आसबो ना E equal to root over of E r square plus e theta रा स्क्वायर इक्वल टू देखो एटी कॉमन कौन पळाइसो ना p 4 pi epsilon 0 r q कौन पळाइसो देन p डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r q कॉमन पळाइसला रहिला कौन ना रूट ओवर भितरे 2 cos square theta plus sin square theta
देख माने एटा कोन एटार स्क्वायर आस्थिबो ना एठी गोटे स्क्वायर तो एठी गोटे स्क्वायर तो स्क्वायर तो हमें कॉमन आले स्क्वायर रो रूट ओवर कोन आसीबो केवल सिंगल डिजिट सिंगल एयर आसीबो ना सो देख आको हमें लिख परिया कोन cos स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब देन देखो एटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एटा sin स्क्वायर थीटा का हमें कोन लिख परिबा ना cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो आसला कोन ना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 এটা হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা হচ্ছে ফাইনাল এক্সপ্রেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে হচ্ছে কোন না ফাই ওকে the angle phi with the resultant phi x e makes with r the angle phi for which the resultant field E makes with R. Okay. तो phi कौन आसीबो ना phi equal to tan inverse E theta divided by E R. तो phi को हम कौन लिख परिबा ना tan inverse E theta divided by माने E theta by E R कोन हबो E theta तो कैंसिल हो जो रहिबो गने sin theta divided by cos theta into 1/2 तले सेटा sin theta by cos theta कोन आसीबो tan theta so 1/2 tan theta এটা হচ্ছে phi ओके सो एटा थिला फाइनल एक्सप्रेशन देन आर हमें दुटा स्पेशल केसेस अछि ताकू हमें देखिबा कोन कहूची अरे छाड़ा मु फाइनल एक्सप्रेशन टा इट लिख नउची ई रा फाइनल एक्सप्रेशन कोन आसे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय r क्यूब रूट ओवर ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओके सो हमें कोन करबा ना स्पेशल केस नंबर 1 स्पेशल एक नंबर कौन आसो ना p is on the axial line जो थीटा होची 0 डिग्री axial line कौन ना आर जो लाइन रे ऑलरेडी हमर डाइपोल ऑलरेडी जो लाइन रे अछि सेही लाइन रे जतल p आसी रहयो जतल थीटा हो कोन 0 देन थीटा 180 हो देन थीटा का cos तो 0 सो सॉरी cos 1 ओके तो हमें पाइबा कोन इलेक्ट्रिक फील्ड कोन पाइबा E इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ओके सो प्लस 2 ओके केम थला ना देखो cos स्क्वायर थीटा एटा हो 1 हे जो 1 हेला पर 3 प्लस 1 हो 4 रो रूट ओवर हो 2 देन 2p 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब ओके ए जगह रे केवल cos स्क्वायर थीटा जगह में कोन पकेला ना 0 पकेल देन सेकंड नंबर कोन आसीबो when p is on the equatorial line ओके तो इक्वेटोरियल लाइन में थिबो सेतल कोन हबो ना थीटा हबो 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री 0 तो ये हे वाला 0 देन 1 रूट ओवर तो हे जो 1 सो आसीबो कोन ना e इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ओके ये दीटा चला दीटा स्पेशल केसेस ये केस थला या ऊपर मे भी तमरो प्रॉब्लम भी आसी पारे सो ये थिला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो आउ हमें देखिनवा ए क्लास रे कोन ना फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे फोर्स कोन आछे ओटा डाइपोल ऊपर देन हमें देखिया कोन टॉर्क ओके तो टॉर्क जिंस कोन टॉर्क केमता एक्ट करछ ओके तो मते 5 सेकंड दियो के पानी पानी पी के आसे ओके ओके सो हमें देखिबा फोर्स ऑन ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हला तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे फोर्स कोन रहिबो
dipole in an uniform electric field. ओके सो देख गोटे आम नवा कौन ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नवा ता देहरे आम रखा कौन गोटे डाइपोल रखा जोटा कि एफ बी देन बी पॉइंट प्लस क्यू बी अच्छा यहाँ को आम ए दे ना प्रायतः आम प्लस तो ए ही न এটা তার ডিরেকশন মাইনাস কিউ ই ফোর্স পড়িব তা উপরে এটা মাইনাস কিউ আর এটা হচ্ছে প্লাস কিউ ওকে দেন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা থিটা অ্যাঙ্গেল করুছে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিরেকশন ওকে সো ঠিক আছে আউ টিকে উপর কেতলে ভাল লাগি থান্তা ওকে consider an electric dipole consisting two charges plus q and minus q separated with a distance 2dl ओके सो आम 2dl कहीं ना ये आम गोटे डिरेक्शन नौचे और 2dl कह जमी ds था गोटे स्मॉल एरिया 2dl था स्मॉल लेंथ ओके तो तुम मैंने समस्त ऑलरेडी ही जानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कौन जो दुईटा चार्ज अपोजिट चार्ज गोटे स्मॉल डिस्टेंस रे कनेक्ट होते से आम डाइपोल कहू ओके सो आम ने कौन ना गोटे डाइपोल ने जोटार कि डिस्टेंस होचे से दुईटा चार्ज भीतर डिस्टेंस होची 2dl ओके when such dipole placed on an electric field and makes an angle theta ओके एंगल थीटा जो तले से क्रिएट करे से कौन हुए कौन हम ना फोर्स पड़ो क्या प्लस क्यू माने प्लस क्यू पर गोटे फोर्स पड़ो माइनस क्यू पर गोटे फोर्स पड़ो देखिए कौन ना फोर्स ऑन द चार्ज प्लस क्यू कौन आसो ना प्लस क्यू ई देन फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू कौन ना माइनस क्यू ओके तो प्लस क्यू जो चार्ज आस प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में देन माइनस क्यू कौन पाई कारण देख इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सियाड़े अच्छे कि माइनस क्यू डायरेक्शन इे अच्छे सो यहाँ आसो माइनस क्यू ओके तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन अच्छे यहाँ विथ द डायरेक्शन अच्छी ताले नेट फोर्स कौन आसो नेट फोर्स इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू ए माइनस क्यू ई इक्वल टू 0 सो नेट फोर्स होची कौन जो आम इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करूँ कि एंगल रे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे से तार नेट फोर्स कौन आसे ना नेट फोर्स 0 आसे ओके माने ता ऊपर फोर्स एक्ट कर 0 किंतु सेटा आउ गोटे जिन एक्ट करटा हूँ टर्क बुझिपार देख ये आर फोर्सटा आड़क जाऊँगी आर फोर्सटा आड़क जाऊँगी मैंने दुईटा अपोजिट डायरेक्शन अच्छी तो से कौन हो नेट फोर्स हूँ 0 किंतु जेहेतु ये आड़क टाणुचे से साड़क टाणुचे एत चोर टाणुचन ये डाइपोलटा कौन कर रहीकिना बुलिब मैंने कौन कल एमती बुलिब है तो बुलिब से जो बुलिब से हूँ कौन ना गोटे टर्क है गोटे मुवमेंट अच्छे ना डाइपोल मुवमेंट को
लिखिनी कि अच्छा तो मुझे लिखिनी किंतु आम से लिखि नवा माने या पर जो देखा से लिखि नवा तो जो बुलब से गोटे मुवमेंट क्रिएट हो से मुवमेंट ना हो कौन ना टॉर्क ओके फोर्स ऑन ए डाइपोल गला एबे देखा टॉर्क ऑन ए डाइपोल सेटा था distance which is 2dl now 2dl sin theta 2dl sin theta okay एना हमें देखिबा कोन ना टॉर्क the dipole moment of dipole is given by dipole moment कौन आसवा P equal to Q to dl okay ठीक है dipole moment then we found on the f of we found that the net force on the dipole due to the external electric field is 0 okay so external electric field by net force आप हो चुके कौन है 0 because this force don't because of this force don't line up they create a turning effect अच्छा ये जो फोर्स टा आंक पर लागू जे दीटा जेतु ये एपडू लागु से सेपडू लागु सेति पे एठी गोटे तयारी हो कोन ना टर्निंग इफेक्ट गोटे टर्निंग इफेक्ट दे दो the moment for which the turning effect works is given by अच्छा ये मोमेंट को हमें कौन लिखवा ना देखो Q to dl E sin थीटा ये जो टर्निंग इफेक्ट है सेटा हो जे कौन ना Q to dl E sin थीटा देन हमें जानि छे Q to dl हो जे कौन P वेक्टर देन P E sin theta we know P and E are two vector quantities and theta is angle between them okay एटा हो कोन ना वेक्टर क्वांटिटी p टा भी वेक्टर क्वांटिटी और e टा भी हो वेक्टर क्वांटिटी आ sin थीटा जो थीटा अछि सेटा हो एंगल ताक भीतर सो वी कैन राइट कौन लिख परिबा ना p e sin थीटा कौन हबो ना p वेक्टर आ e वेक्टर रो क्रॉस प्रोडक्ट तला हम पाइले कौन ना टॉर्क कौन पाइले ना p क्रॉस e वेक्टर ओके ये होचे कोन ना p वेक्टर माने मोमेंटम आ इलेक्ट्रिक फील्ड रो क्रॉस प्रोडक्ट जोटा होचे कोन ना टॉर्क एटा होचे टाउ पिला माने एटा साइन होचे टाउ ओके तो हमें एक क्लास रे कोन देखले ना इलेक्ट्रिक फील्ड देखले सॉरी
इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल देखले जोटा कि 5 मार्क आस परिबो ये दीटा का शॉर्ट नोट्स अछि टॉर्क ऑफ फोर्स किबा मिसे कि तमरो गोटे 5 मार्क आस परिबो अढे अढे 5 आस परिबो किबा 2 मार्क भी आस परिबो हला तो ये थिला आज क्लास रहिली जय जगन्नाथ जय मां सारा।